Good afternoon, everyone. It is my pleasure to introduce Ms. Sangeeta Shart ma'am, who has graciously accepted our invitation to join us today. We are honored to have Ms. Sangeeta ma'am with us today to share their insights and experiences with us. Ms. Sangeeta ma'am is a certified counselor, family therapist, and a corporate trainer. She has rich experience of over 23 years in counseling, training, and consulting. She has done her research in psychology on behavioral skills, anxiety, depression, mood disorders, etc. She has also worked on various projects with NGOs, spiritual organizations, etc. She is awarded with Achievers Award for her contribution in development of women and youth empowerment. On behalf of Atulasha School, I would like to extend a warm welcome to ma'am and thank her for taking out time to be with us today. Thank you so much, ma'am. Thank you. The little token that the teachers have put in effort. Oh, wow, this is so beautiful. Wow, this is so lovely, really. Thank you so much. This is from the universe and nature for a blissful life ahead and good health. This is very close to my heart, Thank you. nature. Thank you. I'll place it here. Yes. So thank you, everyone. And let's start this journey of life where we start living a life of happiness and positivity. So starting with today's session, this is on how to create positivity at work and in whatever work we are doing, whether it's our office work or whatever work we do in our daily lives. So before we start, as she said, I'm Sangeeta Sharad. And let's start with an activity. Are you all ready? Very good. So it is just a small activity we'll do. We'll introduce ourselves with like adding an adjective to your name, which starts from the first alphabet of your name. Suppose I start introducing myself. I'll say, hi, I'm Superb Sangeeta. I like to add value and, give, like to make difference in people's life. That's what I do. So something like this, you can add a one-liner, some quality, an adjective to your name. Okay, so let's do it quickly. It will take 5 minutes. We'll start with you. Okay. I'm aware Anupama. I'm very simply Savita. I am very friendly, Sheetal. Hi, I'm very too friendly with Nemeka. I'm also friendly, Nemeka. Just think, starts with N. You can think of any adjective. Just from your name, like I'm Anupama. Nature. Love the nature. Yeah. Right. मेरा नाम मधु गौतम है। मैं सिंपल सादा रहना पसंद करती हूँ। Marvelous. Marvelous. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Marvelous. Yes, ma'am. I'm Smart Saloni and I want to create good habits that increase life satisfaction. Very lovely. I am brave Himanshi. Brave. Brave. Perfect. And what about Bhavika? I am blessed Bhavika. Right. So please raise your hand. Clap for yourself. Clap for yourself and everyone. Wonderful. Okay, so let's start the session now. Can anyone tell me which is the biggest asset in the world? Biggest asset in the world. Asset मतलब जो बहुत ही अत्यधिक important चीज, संपत्ति. Okay, parents, family. I need a marker or something. Do I do? Okay,
Someone is saying family, parents. Anyone? Please make this interactive. See, the thing is, when we participate in a group, we learn better, we learn faster, we improve our skills, and we build up our confidence. So this is very important. And this is just a small group, so let's all participate. Sahi galat kuch nahi hai. Just say it. हाँ, जो भी आपसे पूछा जाए. Just enjoy the session. Just enjoy the session. All right. So, और कोई? Yeah. Ourselves. Yes. Very good. Students. Yes. Teacher के लिए तो बहुत जरूरी है students. Okay. Kindness. Anyone else? Huh. Health. Most important. Health is wealth. So the biggest asset in the world, it is said, is your mindset. आपका mindset. मतलब, see, mindset is nothing, but it's the lens through which we view the world. हमारी सोच, हमारा नजरिया, हमारा thought process, the way we perceive, जिस प्रकार से हम देखते हैं चीजों को, हम जो समझते हैं. As Buddha said, the biggest asset in the world is how we perceive. So whatever we perceive becomes our reality. भगवत गीता में कहा है यथा दृष्टि तथा सृष्टि. तो जो हम देखते हैं वही हमें सच लगता है. So आगे बढ़ते हुए हम ये समझेंगे that how we can understand and how we can create that happiness in our life through the power of mindset. And see, mind has two parts, the conscious and the subconscious mind. Where the conscious mind, it analyzes, it has short-term memory. It thinks, it analyzes, it is logical. And the subconscious mind, it imagines, it has long-term memory. It has feelings, emotions. तो क्या होता है? जब कोई भी thought आता है मन में, तो उसके साथ क्या आता है? क्या आती है? Feelings. Feelings मतलब विचार हो गया thought, feelings होता है जो उसके साथ भावनाएं, perfect, जो हमारी भावनाएं होती हैं उस टाइम. तो हम कोई भी काम करते हैं वो हम एक particular भावना रख के मन में करते हैं, isn't it? So वो जो thought create होता है mind में, उससे feelings और emotions आते हैं. And these emotions further, they create the action. Is my handwriting clear? Okay, they have certain kind of actions and they have certain kind of behavior. Please understand, this is a very important concept which I have developed. I have created specially designed like that so that to make it very simple. ये जो action होते हैं, ये क्या further produce करता है? Very good. Result. या फिर consequences. And this goes on. This is a vicious circle. This is a vicious circle which goes on. तो सारा game किसका है? Feelings का है. सारा game feelings का है. हम क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं, भावों का सारा game है. And that forms our belief system. So अगर हम बात करें अपने workplace की, do we enjoy our work? So a survey was conducted and it was observed that almost 60 to 70% of the people, they don't enjoy their work, whatever they are doing. जैसे जो businessmen हैं, वो job करना चाहते हैं. Those who are doing job, they want to be an entrepreneur. So they're not happy doing what they want to, in whatever field they are doing. So in order to be happy, what is required is there are two things. There are two ways, rather. So one is that you do whatever you are doing. The first thing, if I tell you, is जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको passion है. Like you are doing what you are passionate about, what you enjoy. First thing is this. Second is whatever you are doing, just start finding joy in that. Enjoying
whatever you are doing. Just create it, get into it. And you will start finding joy in that. तो वो कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है वो कि कुछ भी कर रहे हैं और उसमें joy मिल जाए? How is that possible? You know, we are all humans, isn't it? Yeah. Very nice. On the right track. Perfect. So, आप कैसे कर सकते हैं? I have something to share with you here. So, something to share. Yeah. Zoom. नहीं शेयर करना ना आपको। Zoom पे। ठीक है। पहले मैं फाइल बताइए कौन सी क्या शेयर करना है, उसको ओपन कर लीजिए। ओके, ठीक है, मैं अभी ओपन करती हूँ। मैं इसको आपको शेयर कर देता हूँ, आप कर लीजिएगा जल्दी से। नहीं, आप इसी पे आएंगे। ये हाँ, ये मैंने सेट किया। ये है या शेयर कर दूँ? अभी 1 मिनट रुकेंगे। ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है। नो, कोई बात नहीं। You can share it. You can see कोई on बात the नहीं, screen. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Yeah. But I wanted to go one by one. 1 by 1 कर Yeah. ठीक है, आप कर लीजिए, फिर मुझे बता दीजिएगा। जो कि 1 by 1 कर लिए ना, उसे हम बैक साइड में ओपन करें। तो वो क्या हो सकता है कि जब हम उस माहौल में हो, जो भी हम काम कर रहे हो उसमें हम खुश रहें, वो कैसे हो सकता है? Yes, first thing is that you are open to learn, है ना? तो क्या होता है when you are in that positive feeling zone? Now there are 2 feeling zone. 2 तरीके हैं। Good feelings होता है, एक bad feelings होता है। One is positive feeling zone, one is negative feeling zone. So positive feeling जैसे आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, सपोज आपको मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, आपको कोई बुक पढ़ना अच्छा लगता है, या आपको कहीं घूमना अच्छा लगता है, फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है। सो उस टाइम पे आपकी फीलिंग क्या होती है? enjoying, light और pleasant. Please come up with words. अच्छे वर्ड सोच के बताओ. Yes. Excitement होती है, आप बताइए मधु. खुश होते हैं बहुत, very good. और overwhelming, yes. हाँ, बस सारी बातें जो भी दिन की बात है सब बता देते हैं, है ना? When you are happy, so you want to share. Perfect. तो ये I wanted to share with you a chart. Sir is going to do this for me. एक बार बता दो ये first. Yeah. Okay. आप मुझे एक बार बता दो, I'll do this. So can you see this? Yeah. Now can you all see this? See, this is a feelings chart. इसमें क्या है सबसे ऊपर? Love, gratitude, friends, joy, compassion, happiness, celebration, satisfaction, empowerment, hope, enjoyment, contentment. You go on. है ना? कितनी अच्छी अच्छी गुड फीलिंग जब आपको अच्छा लगता है. Calmness, peace, togetherness. So ये सब क्या है? Good feelings. जब आप महसूस करते हैं कुछ काम करते हुए, कुछ सोचते हुए, कई बार. हाँ, और ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है हमेशा गुड फीलिंग में रहेगा, या ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है वो हमेशा बैड फीलिंग में रहेगा. अगर ऐसा है then you need to be aware something is wrong, because हमेशा बैड फीलिंग में जाना भी गलत है, और अगर आप हमेशा गुड फीलिंग में है तो बहुत ही अच्छी बात है. then you are on the next level and that's what we will work on. तो जब आप नेगेटिव फीलिंग में होते हैं तो आप कैसा सोचते हैं? You feel bored, you feel confused, you feel agitated, angry, depression, anxiety, fear, sad, lonely, irritated. तो और कोई नहीं मिला तो 2-4 बच्चे पे ही लगा दिया. क्योंकि
इरिटेशन है तो कहीं तो निकलेगी ना, जहां निकल सकती है वहां निकल जाती है, ठीक है। सो हमने क्या समझना है कि वेदर आई एम, यू हैव टू बी अवेयर एक्चुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न। तो आप अवेयर हो जाएंगे कि वेदर आई एम इन अ गुड फीलिंग जोन और अ बैड फीलिंग जोन। तो वो कैसे होगा कि आप गुड फीलिंग में रहें हमेशा? हाउ इज इट पॉसिबल? वी आर ऑल ह्यूमंस। Absolutely. Please clap for her. Chalo, very nice. Lovely. That's very good. Yes, please tell your name. Savita, very nice. Yes, Saloni. Positive in life. Try to remain positive in life. That's what we are learning. Ignoring many a things. Yeah, you have to ignore many a things at time. Perfect. तो एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे अगर आप सपोज आप कोई एयरटेल में काम कर रहा है, तो वो ये सोचे that there is a long distance call between a father and a son. I'm just helping in that. I'm creating a cause. या कोई बैंक में काम कर रहा है तो वो ये सोचे कि मैं कोई लोन किसी का सैंक्शन करा रहा हूँ. I'm just helping in that. There's an old person and he wants to get the loan, or maybe I'm trying to open an account for that person. तो क्या होगा कि उससे एक अच्छी फीलिंग आएगी that I'm helping somebody. So when you get into the mode of finding a purpose to create a cause, that is the time you hit the belt. Okay? तो मतलब आपने एक purpose ढूंढ लिया to create a cause. That is the main thing. What I'm trying to tell you. तो और भी कई छोटी छोटी सिचुएशन आती, जैसे मैम ने अभी बताया कि जैसे जरूरी नहीं है यू आर अर्निंग और नॉट अर्निंग, डजंट मैटर, यू नो व्हाट रियली मैटर्स इज कि आप कोई भी काम कर रहे हैं. सपोज आप घर का ही काम कर रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, सो यू कैन ऑलवेज से दैट यू नो थैंक गॉड आई हैव अ फैमिली एंड आई एम केपेबल. कितने लोग हैं जिनकी फैमिली नहीं होती है, कितने लोग हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं. सो यू कैन ऑलवेज फील दैट. क्योंकि अगर आप इस नेगेटिव थिंकिंग जोन से बाहर नहीं आएंगे तो क्या होगा, आप फिर वो नेगेटिव में अंदर डूबते जाएंगे टिल यू गेट द लास्ट फियर एंड वरी. उससे बाहर नहीं आ सकते. उससे बाहर आने में बहुत टाइम लगता है. आस्क मी, बिकॉज every day we get to know about number of cases that are increasing. तो उससे बाहर आने में बहुत, तो ये कहाँ से स्टेज शुरू होती है, जब आप धीरे धीरे ये शुरू होता है. सो वन नीड्स टू बी अवेयर. नहीं तो क्या होगा कि आप हर टाइम, उसका आउटकम क्या होगा, आप हर टाइम एजिटेटेड रहेंगे, एंग्री रहेंगे, बोलेंगे अरे आज तो मेड भी नहीं आई और सारा काम मुझे करना पड़ रहा है एंड आई एम रनिंग लेट, और ये भी क्या हो गया, मुश्किल काम हो गया, ये बहुत मुसीबत हो गई मेरे लिए. सो क्या होता है, यू क्रिएट सच सिमिलर सिचुएशंस रिपीटेडली. दैट्स व्हाट हैपेंस. वो बार बार आती है. एक चीज खराब हो जाए तो फिर एक के बाद एक हो जाता है, बिकॉज दैट इज, वो सब एक के बाद एक आता है. दैट इज द मूड वी क्रिएट. यस, दैट इज एग्जैक्टली द थिंग. तो क्या होता है कि उसमें फिर आप सर्वाइवल मोड में आ जाते हो. क्या होता है सर्वाइवल मोड? सर्वाइवल मोड मीन्स व्हेन यू आर स्टक समवेयर, यू आर अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन. That is survival mode. So do you want to be in survival mode? No one wants to be in survival mode. So what is required is that you need to understand that abhi jo bhi hai, jitna bhi hai, you need to come out of that. हाँ? और आपको उस survival mode से बाहर आना है. Anything? So वो उससे बाहर आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? Yes, so these are small ways, you know, of being grateful for what we have, rather than complaining and cribbing about what we don't have. That is the whole thing about. Okay, so who is going to read? So before that, we'll start this topic today. What we are doing, it's on reading. First, we'll read from a chapter, which is very relative to this topic.
then we'll dwell on it, we'll understand the concept, और फिर हम उसका interpret करेंगे, we'll understand. In between you can ask question, or maybe later we can ask question, no problem. But the session is open for questions. Next slide दिखानी है मुझे. Yeah. So be thankful for what you have. Your life, no matter how bad you think it is someone else's fairy tale. तो जो अभी हमारे हालात हैं, हमारी जो सिचुएशन है, कितनी भी हमारी लाइफ खराब हो रही है या खराब हो चुकी है, but then it can be a fairy tale life for someone else. It can be a dream life for somebody. Somebody is dying to have that kind of life. उसके पास शायद वो भी नहीं है. So when we understand this, we start being grateful for what we have. And this is a feeling that you start developing. Okay. So after this, we can start with book reading. मैं stop share करती हूँ. And again, I do this. And this PDF. Okay. So this topic, this book is by Rhonda Brand. It's a famous book. Taken a chapter from her book. So we will go para by para, and I will keep explaining. And anything we can discuss after the session or in between. Huh? Yeah, whichever way is comfortable. Whatever is comfortable to you. I can sit? Yes, yes, of course. Yes, please. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए. if you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. Tom Robbins. Tom Robbins is the right choice. Thank you. Thank you, Bhavika. See, this is a very important quote, if you understand. If you take any activity, तो इसका मतलब है कि कोई भी we can put it here और हम इसमें ये आप ले लीजिए. No worries. We can continue. You can continue. Doesn't matter. See, कोई भी एक्टिविटी मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई भी डिसिप्लिन मतलब है चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप आर्मी में हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, व्हाटएवर डिसिप्लिन उस तरीके से. और उसके बाद कोई भी आर्ट मीन्स एनी स्किल डेवलपमेंट, वेदर यू आर लर्निंग दैट स्किल और यू आर मेकिंग अदर्स लर्न, लाइक अ टीचर यू आर, है ना, तो आप उसमें सहयोग कर रहे हैं. सो यू पुश इट टू द हाईएस्ट मीन्स यू डू इट विद योर मैक्सिमम पोटेंशियल, टू योर हाईएस्ट पोटेंशियल. तो उससे क्या होगा,
जब कोई भी काम इतनी शिद्दत से करें आप, तो यू गेट गुड रिजल्ट. तो रिजल्ट जैसा भी होगा, मतलब जरूर नहीं है, पर आपको एक सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा काम अपने आप हो रहा है. दैट इज द मेन थिंग. कई बार ऐसे होता है कि आप कोई भी काम करते हैं, वो इतनी शिद्दत से करें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि काम कैसे हो रहा है. We learn in between. Yeah. Yeah, and you develop your skills more. Yes. तो अभी जिस लेवल पे हैं आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, उससे भी नेक्स्ट लेवल. और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे लाइफ में तो सब ठीक है, तो भी there is a next level. There is always a next level. All right. So we will take the next paragraph. And आप सलोनी, आप भाविका, आप उधर बैठ के पढ़ लेंगे. No problem. We will just read, and you can take the mic if you want. इसको थोड़ा सा नीचे करना है. You can read from there also standing there. That's no worries. तो फिर ठीक है, लैपटॉप तो नहीं कर देंगे. Please go ahead, Bhavika, conversation on. Okay. I'll have to go there. How can it be that a person who is born into total poverty starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success while the other person works? ज्यादा हो गया. While the other person works himself or herself into the ground with little success, no matter how hard they try. The missing link to success is gratitude. Because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. So कई बार हमने देखा है, you can see big industrialists like Tata Group, Azim Premji from Wipro Group, and Elon Musk, Tesla, Twitter. So many big dignitaries. Even I was reading about Jay Madan. So what they do is 30 to 40% of their earnings, it goes to charity. See the kind of gratitude they have. So अब जैसे एक दूसरा example है, we can see the Ambanis, I mean, without taking much names, but we have seen that how one person, like children born from the same family, one grows up to build a big empire and the other person is just average. How is it possible? Because as Tony Robbins, a famous, he's a coach. So he said that whatever you do it to the best of your ability. Be the best version of yourself. तो आपको कभी वो शिकायत नहीं रहेगी खुद से. नहीं तो हम कई बार गिल्ट में चले जाते हैं. गिल्ट मतलब हमें बाद में गिल्ट होता है, उस टाइम नहीं होता. जब कुछ भी एक्शन हम कर रहे होते हैं या हम कुछ सोच रहे होते हैं, उस टाइम गिल्ट नहीं होता. गिल्ट मतलब okay.
गुड, बट दैट इज अ मटीरियलिस्टिक थिंग, है ना? तो उसमें क्या होता है, उसमें कंपैरिजन आ जाता है, उसमें आप फिर जो अपना बेस्ट है वो नहीं कर पाओगे. सो टू गिव योर बेस्ट, व्हाट यू नीड टू डू इज just give your best. You got my point? Okay, please read further. आप यहीं से ही पढ़ लो. To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Should I go on? Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. या तो ये क्या बात है, मतलब जिसके पास पहले से ही है उसको और दे देंगे, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा. So is this fair? Everything is fair in love and war. Yeah. हाँ हाँ. Now you got my point. तो जब आप वो ये सोचेंगे कि उसको उसके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसे, तो क्या होता है, आप खुद को बेचारा बना लेते हो, आप खुद ही नेगेटिव फीलिंग में चले जाते हो, आप खुद ही गिल्ट में चले जाएंगे, कंपैरिजन में चले जाएंगे, कंप्लेन में चले जाएंगे, क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे. तो क्योंकि दूसरे की अच्छाई नहीं दिखेगी, फिर आपको उसकी अच्छाई में भी बुराई दिखेगी. Isn't it? कि कुछ अच्छा कर रहा है तो कुछ उसके मन में भी कुछ होगा तभी वो अच्छा कर रहा है. So these kinds of feelings we do have, we all have. This is quite natural, but then we have to overcome this over a period of time. तो क्या होता है कि जितना हम gratitude करें, gratitude मतलब शुक्राना, जितना हम शुक्राना के भाव में रहेंगे उतना हमें और abundance मिलेगी. Abundance in terms of everything. Everything. Here we are not just talking about money. Okay. No problem. When you're grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate. I have some problem with that word. There's some words that we cannot speak properly anytime. Yeah, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. So the thing is, see, when you get up in the morning, so what is that thing that makes you get up in the morning and just get going? For me, I'll tell you, I always Yeah. say thank you God for giving me another blessed day. Very nice. May I come across only good people in my life always. So I feel very sorted. जब मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, मुझे अच्छा लगता है, because अच्छे लोग मिलेंगे तो आगे के लिए आपके लिए navigation बड़ी आसान हो जाए. That is my only prayer I do in the morning. Rightly said. Very good. So what is that thing which you look up to? Just when you get up in the morning. तो अगर सुबह उठते अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं तो ठीक है. बट अगर सुबह उठते ही रश हो रहा है और वो तो मतलब, तो फिर क्या होता है, पैनिक हो जाते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इट इज सेड दैट एक बारी 2-3 मिनट आप अपने आप को दीजिए,
और फिर उसके बाद आप just go and start your work. हाँ, तो जैसे इसमें अभी बताया है, suppose I give an example of just now I gave example of a job. Like in your job, if you're not happy, what is that one thing? You start finding a purpose. You start finding how I can create a cause, a good cause to the institution where I'm going. Similarly, when you are, suppose you start a business. Now in that business, you're very happy and you are doing it, but something goes, just something happens and you start taking everything for granted. You start taking your employees and your clients for granted. तो आप ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा ये तो टाइम से नहीं आया, या फिर क्लाइंट्स के लिए आप ये सोचते हैं कि कैसे इससे मैं ज्यादा अमाउंट ले लूं, or maybe some deal doesn't fix up well. So what happens is the condition deteriorates. What happens is that the stress builds up and breakdown happens. तो एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि everything happens for a reason, season or lifetime. कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है. It has to be a reason. It is there for a season or maybe a lifetime. That is the main thing. Okay, sure. That's so nice. So am I enjoying. Okay, so then the next one, the amount. Should I read? The amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more gratitude you have for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry and their business spirals down. So, क्या होता है, like if you are grateful for your job, no matter what happens, तो क्या होगा? You will get more. That is one thing. But how? See, कहते हैं wherever your attention is, there energy flows. Wherever your attention goes, energy flows. This I'm not saying, this is said by, this is the law of the universe. It is said by Nikola Tesla, the greatest scientist, who said everything is energy. Energy matlab? That's energy. आपका ऑरा, जो कुछ तरंगे होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, वो सब एनर्जी है. थॉट्स में भी एनर्जी है. हर चीज एनर्जी है. तो if you are in business or we are doing our job, तो क्या जरूरी है समझना कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी कमिटमेंट towards your work, towards your job is what matters. Because if you have that attitude of gratitude, no matter what, then what's going to happen? If you have that attitude of gratitude, then you will set yourself as an example in that company. It so happens. It's natural. It's the law of the universe. Okay. So any questions so far? So please. We are grateful. We are full of gratitude. But still we get to attract a negative thing. We get to hear that negative. Why that happens? See, अगर अपनी बात करें तो जैसे हम अगर अपनी बात करते हैं, अभी दूसरे की बात बाद में करें, तो जैसे अपनी बात हम करते हैं, so I am doing so much, और अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मेरे साथ तो अच्छा नहीं हो रहा, but क्या होता है कि thoughts are not pure. कोई जरूरी नहीं है कि A कर रहा है तो A ही वापस आएगा. A कर रहा है तो B भी आ सकता है, C भी आ सकता है, D भी आ सकता है, E भी आ सकता है, and so on and so forth.
बिकॉज माइंड की ये कैपेसिटी है कुछ भी सोचना। कहते हैं ना चंचल मन, तो मन जो है कुछ भी सोचता है। तो वो माइंड उस टाइम क्या सोच रहा है आपको नहीं पता, किस टाइम पे क्या फीलिंग जाती है, यू नेवर नो। We are not in that consistent practice to think positive all the time. Mindfulness activities. How to consolidate our emotions when our thoughts go negative. Yeah. So when your thoughts go negative, तो उस situation में वो तो practice से ही होगा। एकदम से आप, हाँ, धीरे धीरे practice से होगा कि आप एकदम से retaliate ना करें, एकदम से response ना दें। That is the first thing. क्योंकि आपका response ही main होता है, जो उस time दूसरे को दिखता है और आपको खुद को समझ आती है। Yeah. So this is for everybody. Truthful also. जैसे मैंने अभी बताया कि commitment towards your work, integrity, that is more. Integrity मतलब होता है कि आप कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं लॉयल्टी के साथ, आपकी कमिटमेंट है, आपकी इंटेग्रिटी है ना? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वील टेक मोर क्वेश्चंस लेटर, 1-to-1 आल्सो पर्टेनिंग टू दिस. तो आप और मैं होंगे बस. हाँ, अच्छा लगता है बिल्कुल. हाँ, नहीं कर सकते. यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ स्किल टू जज पीपल. कई लोग जज कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर पाते, कई लोग सारी उम्र लगा देते हैं, वो जज नहीं कर पाते. It is not necessary. I never do match. Match the vibe like this. To know if I can do. It's not about a meeting like that, but to when you meet friends and you meet random. Yeah, you should know how to make right choice. Yeah. In that excitement, you might take. I mean, we will make friends, but some might be, some may think good for us. Yeah, some may not, because see, the thing is, suppose जैसे आजकल स्कूल में हो रहा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर है, तो वो क्या करते हैं, दे unnecessary, knowingly or unknowingly, unwantingly also, they don't want to, but then they get into that friendship because वो बड़े soft होते हैं. जो उनको जो दूसरा बहला रहा है ना, तो वो बड़े प्यार प्यार से बहला रहे हैं. पर जो पेरेंट्स हैं, इट इज सेड दैट योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स आर योर रोड टू सक्सेस, योर गाइड टू सक्सेस. क्यों? क्योंकि वो गुस्सा भी कर रहे हैं, वो मार भी रहे हैं, वो डांट भी रहे हैं, तो वो गलत लगते हैं बच्चों को भी, सबको. मुझे भी कोई डांट के बोलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, isn't it? बट हम फिर क्या करते हैं, वी टेंड टू फॉल इनटू दैट नेगेटिव फ्रेंड्स. इट्स अ ट्रैप. हाँ, जैसे मैंने बोला, इट्स अ विशियस सर्कल. तो वो आप उसमें चाहे, एक होता है मनचाहा, एक होता है अनचाहा. तो आप ना चाहते हुए भी आप उसमें घुस जाते हैं, बिकॉज वहां पे आपको मजा आ रहा है, आपको, यू आर एंजॉयिंग द कंपनी, यू आर हैविंग फन टाइम. वो लाइक माइंडेडनेस आपको लगती है, चाहे अंदर से आप कुछ ना, यू फील मोर रिलैक्स्ड, है ना? और पेरेंट्स एक ही बात बोली जा रहे, पढ़ तो बोल रहा है, ये इनको छोड़ो, इनको बोलने दो जो बोल रहे हैं. लेट मी डू व्हाट आई वांट टू. एटलीस्ट वो 10 मिनट तो मुझे शांति के रहेंगे, till I, that is what. क्योंकि माइंड इज ऑलवेज, माइंड की क्या प्रॉपर्टी है, माइंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट कीप्स ऑन गोइंग. वेरी गुड. माइंड है, भागता रहता है. जैसे हम एक घोड़े को देखते हैं, घोड़े का क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, भागते रहना. जैसे माइंड की प्रॉपर्टी है, तो वो रुकता नहीं है, वो भागता रहता है. तो उसको कंट्रोल क्या करेगा? यस. और क्या कंट्रोल करेगा? दैट इज व्हाई आई वांटेड अ व्हाइट बोर्ड, क्योंकि मुझे आदत है. आई हैव बीन अ टीचर माई सेल्फ. आई स्टार्टेड माई करियर एज अ टीचर एंड देन डेवलप टू माई स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनर लेटर. तो मतलब मुझे होता है कि मैं लिख के कराऊं. दैट्स व्हाट आई हैव बीन taught. तो माइंड की प्रॉपर्टी है भागना, तो उसको कंट्रोल करता है इंटेलेक्ट, बुद्धि. तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको हम फिर से अच्छे से करेंगे. बुद्धि को कैसे डेवलप, जैसे आपने बोला है, कोई मुझे एकदम से, मैं किसी को देखता हूँ तो कैसे मैं जज करूं,
Judge matlab judging nahi hai, but you need to analyze, you have a mind so that you don't fall in a trap. That's required. Yes. You have to be smart. Hard work के साथ साथ आपको क्या बनना है? Smart भी बनना है. But I always say women are diligent workforces. Yes, they are. We are empowered and we are wiser than men also. We are wired differently, men are wired differently. वो डिफरेंट, उनकी वायरिंग, उनकी सोच ही डिफरेंट होती है. हम लोग सोचते हैं कि ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ऐसे क्यों नहीं, उनकी सोच ही दूसरी होती है ना. They have a broader picture, and men have a broader picture, and women they have a small circle. उनके लिए family, work. If somebody from the family, a gentleman is sitting, we are the ones who will pick it up, or if something has fallen, we will wipe it. Yeah. हमारा बर्थडे होता है तो हम 1 महीने पहले से याद रखना शुरू करते हैं. मैं let me see who all remembers. होता है ना ऐसे. So हमारे सोच वैसे ही बनी है. It is by nature. So we take a short break here and then we continue further. Thank you so much. I'm enjoying the session and I hope so are you. Thank you. If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It is often a once in a lifetime opportunity. And when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experience. All right. See, if you are a parent and your child comes to you, तो वो बच्चा आता है तो आप बोलता है कुछ मांग रहा है या कुछ पूछ रहा है आपसे, तो आप बोलते हैं अभी नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल है मुझे, मैं कुछ काम कर रही हूँ, हाँ तो बाद में आना, या आप गुस्सा कर देते हैं. तो या फिर योर स्पाउस, हाँ, योर स्पाउस ही टेल्स द पार्टनर कि आप पार्टनर कुछ बोल रहा है तो बोल रहे हैं अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करना, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, हाँ, ऊपर से मेरे सवाल पे सवाल हो रहे हैं. So something like that, if that is there, is that being grateful? No, that is not being grateful. See, the thing is, if somebody is approaching you for something, it means if someone is approaching me for something, I should think that I need to support that person. That is for a cause. है ना, कोई किसी के पास जाता है कुछ पूछने के लिए, कुछ बात करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, तो वो बहुत जरूरी है कि आप उनसे उसको सपोर्ट करें. So what is that thing which is very important? Or I should say, what is the most important thing for you? Tell me. Yeah. Sunna, listening. Okay. The person can feel ignored. Should I write all this? So the important thing is, according to you, listening. Okay. Okay, satisfying. Attention. Attention देना बच्चे को. Okay. Care करना. What else? Anything else? Motivate करना. अब वो बच्चा कुछ पूछने आया तो आप कैसे करोगे उसको motivate? सुनना, listening. Yes. Carefully. Anything else? Making them learn good habits. Okay, good habits. Right. All are right. Engage. Engaging them in some work. These are all good practices. But the most important thing that you can give to somebody is your invaluable time. आपका कीमती समय. So I believe that the most important thing is your precious time that you can give to somebody. तो बहुत जरूरी है कि आप उसको, कोई आया तो आप सुन रहे हैं, कोई आपके पास अप्रोच करने आया तो आप वो बात पूरी कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसे ही किसी के पास नहीं जाता. Everything is for a reason. That's what I said. है ना? So आप उसको justice करें. And when I say giving gratitude, what does this gratitude mean? It's not just saying thank you all the time.
Gratitude means you welcome something, you appreciate, you admire, you praise, and you give value to it. Now, adding the value is the main thing which should be done, which should be taken care of, isn't it? So when we work on these lines, we improve our basic inner self, which is ये एक first step है. There's so many steps on this, but ये एक first step है जब आप खुद से समझते हैं, जैसे मैंने बताया, good feeling और bad feeling. Okay, let's read further. You should, यही है, you should. You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. Okay. So the thing is, it is saying that you love your job. तो अभी जैसी भी है, अभी सी यूनिवर्स के लिए कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, कुछ भी कम ज्यादा नहीं है. यूनिवर्स के लिए सब कुछ बराबर है. ये हमारी सोच होती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कम, ये ज्यादा, हमें इतना चाहिए, वो. सो अभी जितना भी है उसके लिए जस्ट बी ग्रेटफुल एंड वैल्यू दोज थिंग्स व्हिच वी हैव. उसमें से ढूंढना है हमको क्या है. So I remember when I was working, I worked with various companies, and thankfully, wherever I worked, I had a wonderful cordial relations with my employers and the colleagues, because I used to organize number of activities and just the best trainer there also. So जब हम वहाँ पे fun activities कराते थे और colleagues भी participate करते थे and students भी participate करते थे. So till today, I get calls from them saying that we had such wonderful time. We really remember you each and every single day when we go to the office. So another good example is of my father, I remember, because at this age also, he is finding ways, different ways, to going to office every single day. नहीं आज मुझे वो काम है, आज मुझे वो काम है. So just to create that positivity around. That is the spirit. Yes, please. Today, imagine that you have an invisible manager whose job it is to keep a record of the thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. Every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can to be grateful for, so at the end of the day, your manager has a long list of all your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time-saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and the computers. Think about the people you work with and the friendships you have with them. Think about the people you make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. Okay. So here also till Here. No, it's fine. Okay. So जैसे आप suppose अपने job पे जाते, how can you be grateful? That is the whole concept. So whatever you are doing, just imagine today, it is just a way of recognizing what all you have in life. छोटी छोटी चीजों से आपको पता चलेगा. जैसे तो it is just a way of recognizing that what all you have. तो आज आप सब बॉस बन जाओ और आप सोचो कि आपका एक मैनेजर है, मेल और फीमेल whatever, और आप उसको बोलो कि अच्छा चलो ये भी लिखो डायरी में, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी लिखो, ये भी लिखो, related to your work. We are talking about work today.
तो आप उसको बोलते जाओ कि अच्छा आप आज अपने वर्क पे आए, आप स्कूल आए और आपने देखा आपको तो किसी ने ड्रॉप कर दिया, ओके थैंक यू, आई गॉट ड्रॉप बाय समवन, यार मुझे टाइम से अपनी व्हीकल मिल गया, जैसे भी मैं आई, अगर मैं कार से आई हूँ तो थैंक गॉड मुझे पार्किंग भी मिल गई, this is wonderful. So these are just small ways I'm telling you, just to you can think about it. And जब आप घर गए तो आपने देखा अरे वाह लैपटॉप भी है, and thank you, I do have a laptop, और मेरे को जॉब भी है मेरे पास, so I'm earning also and I'm having a job and taking care of children, and thank God मेरा घर कितना पास है स्कूल के. So these are just small things which you can be grateful for. Just another way, like when I have come here, so I can say that seeing the weather in the morning, I was a little apprehensive. Acha kaise jaungi and all that. It will take an hour, more than an hour to reach. But then things were so simple, and suddenly when I came out of starting to go, there wasn't much rush and so easy, and weather also was good. So everything just falling in place. Thankfully, thank God for everything. Or luckily, laptop bhi chal raha hai, and you all are so supportive. And thanks to the team who all are working, and those who have come from the Amity school. So everything is so well organized. And thanks to Anupma ma'am for organizing this. So everything is falling at the right place, right time. This is just, इसमें कुछ हम नहीं कर रहे ना, ये तो सब this is by the law of the universe, है ना. बस उसमें सिर्फ एक थॉट आप डाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हो. रेस्ट जो होना है वो तो whatever thing happens, it's up to them. So see, what is the idea? Idea here is it's all scientific, it's all psychological if we go by the mind. क्योंकि जैसे हम इस चैप्टर को समझते हैं और जैसे मैं उसको समझती हूँ, I go with the concept of mind and the law of the universe. So I combine that and understand. ऐसा ही नहीं ऊपर ऊपर से नहीं कुछ भी बोल देना. No, you have to really understand, and it should have some meaning to it. तो जब भी आप ऐसे ढूंढ ढूंढ के चीजें बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं, अपने मैनेजर को लिखवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप recognize कर रहे हैं. So you are trying to, when you speak and write, whatever, in whatever way, you are manifesting it. It's just a process, and it get registered in your subconscious mind. Subconscious mind में different sections होते हैं, and it gets stored in the memory bank. So it is a process. ऐसे नहीं हो जाता. ऐसे it is one by one. Steps जो होते हैं one by one है. तो जब आप इस process से करते हैं, it is gradual, but yes, you achieve the right result, and that is guaranteed. Okay. Yes, please. Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I am so grateful for being blessed. What? So you can say, I'm grateful for my mobile. You know, Yes. it is helping me in so many ways. The list is endless now. So that way. The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created. It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. If this works like magic practice falls on a weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice or practices, and then go back and use this magical practice on the first day you are back at work. All right. Thank you so much for reading so beautifully. Thank you. So this says that lucky breaks don't happen. They just don't happen like that. मतलब lucky breaks मतलब आपने कभी सुना होगा कि किसी को रातों रात abundance मिल गई. Abundance not just in terms of money, but abundance in terms of health, abundance in terms of relationships, abundance in terms of your values. Because there is always a next level. And when I'm saying values, it means you work on yourself to reach to the higher value, to the higher self. You connect with the higher self. That is the next level we are talking about. तो जब आप, क्योंकि ये the language of the universe is
feelings. ये एहसासों की दुनिया है और कहते हैं कि सर्वे कर्म वशा वयम. We are all bound. We are all under the law of karma. So with your life, you can make your life full of positivity, and especially at your workplace with the power of positive mindset. I hope the things are very clear. So we end the session here, but the session is open for conversation, and one-to-one we can, discuss on the topic related to the chapter. Okay. So if it's okay with you, then we can have one-to-one session. Okay. Yeah, we can, I can tell him to know. I can lastly show one slide, which image एक last में है sir, एक last में image रह गई थी. If you can show that. Third. Yeah. So. Yeah. Can you all see? A frog decided to reach top of the tree. All frogs shouted, "It's impossible, it's impossible." Still the frog reaches the top. How? Because he was deaf. वो बहरा था. सब उसको खींच रहे थे टांग के, कुछ नहीं हो सकता, तू नहीं जा सकता. पर उसने सुना ही नहीं क्योंकि वो बहरा था by default. And he thought everyone was encouraging him to reach to. वो सोच रहे कि सब मुझे कह रहे हैं, buck up, you can reach there. Yes, you can. Yes, you can. So be deaf to negative thoughts if your aim is to reach your goal. That is the moral of the story. So thank you so much. I hope you enjoyed as much as I did the wonderful session with you all. Thanks to all the lovely people here. You all are very inspiring. God bless you.